I am Waqas Nasir and I welcome you to Jolly Talk Show. Munib Nawaz is an icon in Pakistani fashion industry and has made his mark on international fashion landscapes as well. The style director of recently launched film Parde Mein Rehne Do talks about his equation with the team, his views about the criticism that our celebrities face because of their style choices, and how the dark moments in his past light up his present. Assalamu alaikum Munib bhai, how are you? Very well, alhamdulillah. Wa alaikum assalam. Firstly, thank you so much for inviting me into your world. Anytime. Like, it's beautiful. Like, all the articles that I was looking at and the studio itself, it's very peaceful. Thank you so much. That's the goal. So, Munib bhai, firstly, I would like to congratulate you. Okay. Parde Mein Rehne Do ke liye. Like, you collaborated on that. I was the style director. You were the style director. How was the experience? It was great. It is still great. It is a lot of fun to do films. I think they are, they are the way to kind of narrate a society ka ek point of view. Bilkul. And films are super essential in any society. The narrative of the society is very, very important to be explained, and I think films do that so well. And plus, Wajahat is like family. The entire Wajahat Rauf, Wajahat Rauf, Shazia, Ali Rahman, Hania, everybody who's a part of the project, they become family. And I think Hania is your muse, maybe? Is she? How would you say that? I don't even do a lot of women's wear, but yes, for that particular film, she was my muse, man. She was, and like there was a fashion show that I was watching, and she was wearing a top with Rebel on it. Hania has worked for me on that as well. She's a really cool person. I think she's a star and a half, and she's super awesome, and she's got a lot of. She's such a hard worker. I think she's one of the hardest workers in any rooms she's in. Okay, that's a very strong recommendation. I would say. She's smart. She works really hard. She's very, very focused at what she wants to achieve. Because ये जो काम लोगों को लगता है ना बड़ा आसान है और यहाँ पे glitzy, glamoury, and all of the pictures they see. उससे पीछे the amount of hard work that goes in. That's not celebrated enough, and I have seen her work really, really hard. Matlab, before we were shooting the big song, the kind of effort, the kind of energy that she was putting in, even though she was famished, उसने 3 दिन खाना नहीं खाया ताकि वो not exact वो उस तरीके से एक तो फौरन से oh my हानिया ने 3 दिन खाना नहीं खाया इस तरह के ड्रामे बनाना बंद कर दो यार बस कर दो क्या हो गया That was my natural reaction, and that's so matlab okay, I wasn't going to make it a breaking news, but I was surprised that she was famished for 3 days. No, she wasn't famished for 3 days. कहने कुछ होती है चीजें that you let them slide interview करते हुए. Okay, I'm sorry. So but she works really hard for that, and most actresses do, but she works really, really hard. So Munib bhai, इसके अंदर you have focused on the traditional attire, I would say. ठीक है, अली रहमान. आपने देखी है film? I'm just talking about the song, the teaser that has come out. Film देखी है? No, I haven't. Like, तो अभी film देख लो ना उसके बाद कर लेंगे film के कपड़ों के ऊपर बात. मैं इसलिए कह रहा था because everybody was talking about that sherwani that Ali Rahman Khan was donning. Okay. So that was your idea? Yes, it was me, Wajahat, Shazia, Ali, all of us. We see when you're doing a film, it's not no one person takes the sort of credit unless it's the director. But generally, what happens is this with Shazia and Wajahat. I think the best thing is that it's a very collaborative effort. मैं उनको कहता हूँ यार ये कर लेते हैं. फिर Ali has to come in and he has to agree, and then he has to say कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. So it is a collaborative. It is a team thing. Now we'll move forward from the movie because I don't want to talk about that. नहीं कर लो बात मेरे से. No, I don't want to. करो. So Munib bhai, there's another thing that I wanted to ask. Recently, we have had 2 to 3 award shows in past months, and I would say that a lot of people were bashed about what they were wearing. I'm not asking you to comment on that, but I'm going to ask you, why do you think that our traditional attire is not making its way to the red carpet? That is possibly one of the lamest things
नॉट टू यू Yeah. बट जो ब्लॉग वो होते क्या कहते हैं जो ये बैशर्स जिनको आपने कहा है Yes. जिनके खुद PhD उन्होंने फैशन हिस्ट्री में की हुई होती है और फैशन डिज़ाइन के उनके अपने बहुत सारे ब्रांड्स Sorry to होते हैं. interrupt, but most of the fashion critics were also involved. मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ Okay. माशाल्लाह से कि उनके अपने ऑब्वियसली $multi-billion बिजनेसेस Yes. हैं. लुई विटॉन के लिए मोस्ट ऑफ दोज पीपल Oh जनरली my God, sarcasm. डू दैट स्टफ आई थिंक. बट अगेन माय पॉइंट इज कि Yes. देखो मैं किसी बुरे बोलने वाले को बुरा बोल के मैं कोई अच्छा नहीं बन जाऊंगा. उनके पास एक राइट है कुछ भी बोलने का. Yes. All I generally tell people is winners don't complain. ठीक है? So if somebody wants to complain, they have the right to complain. I Yes. can't stop them from complaining because they have the right to complain. And if I take away their right to complain, then I'm not doing justice to my own sort of independence. Yes. तो उन्होंने जो भी बोलना है उन्होंने बोला and they said it because that's who they are. ठीक है? Second part of the जहाँ तक वो question, सोच सकते हैं. that's who they are Okay. in that moment. Right. ठीक है. सेकंड सवाल पार्ट ऑफ द सवाल था कि हमारा ट्रेडिशनल नहीं आता. जब कोई ट्रेडिशनल पहन के जाता है ना उसको भी कहते हैं वलीमे पे आ गए, शादी पे आ गए, मेहंदी पे आ गए, बारात पे आ गए. That is the kind of answer that I was expecting. हाँ तो वो बेसिकली अब ये कोई भी नॉर्मल इंसान भी Yes. आपको ये बोलेगा कि यार जो बंदा आपने जिस बंदे ने अच्छा बोलना ही नहीं है, आप काली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट को भी बुरा बोल सकते हैं. Yes. आप काली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट को अच्छा भी बोल सकते हैं. Although it's very iconic. आपकी एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि आप उस मोमेंट में कहाँ पे हैं अपनी ज़िंदगी में. अगर आप खुश हैं आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी. अगर आप खुश नहीं हैं आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. Munib bhai, when you're working, what kind of place you look for? What kind of environment you prefer? This is the kind of anything. यार I am a very adaptive human being. मैं अफ्रीका के जंगलात में भी जाके काम कर सकता हूँ. मैं समुंदर के किनारे में भी काम कर सकता हूँ. मैं गर्मी में भी काम कर सकता हूँ. सर्दी में भी काम कर सकता हूँ. बिकॉज जब मुझे काम करना है ना तो फॉर मी इट बिकम्स अ थिंग दैट आई एम डूइंग. it is a mindset. Then the physicality of the work kind of becomes less important. Okay. The spirit, or it's almost like a spiritual or an emotional experience कि हाँ अब ये मसला है या ये काम है और ये करना है. Oh my ठीक है. और God. उसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अभी मैं काम करवा रहा था, अभी वो पीछे यासिर भी बैठा हुआ है. काम गालियों से भी हो सकता है काम, लेकिन इवेंचुअली काम करने से ही होता है. बिल्कुल. अब उस करने तक आप कैसे पहुंचते हो? कुछ लोग प्यार मोहब्बत से पहुंच जाते हैं, बहुत कम लोग वो होते हैं. कुछ लोग हंसी मजाक से पहुंच जाते हैं, कुछ लोग गालियों से पहुंच जाते हैं, कुछ लोग गुस्से से पहुंच जाते हैं. पहुंचना सबको होता है बिकॉज वो मेरे लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं. बट उनकी अपने हर बंदे के अपने ट्रिगर्स फर्क होते हैं. हर बंदे के अपना एबिलिटी टू गेट टू अ पॉइंट वेयर देयर ब्रेन सेज कि यार अब तो ये सर्वाइवल के लिए करना है. ठीक है. कुछ लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं. मोस्ट पीपल डू इट फॉर सर्वाइवल के. और वो उनका जो भी ट्रिगर होता है फिर उनका कि यार ये मैंने काम करना है, अगर मैंने ना किया तो ये हो जाएगा. तो वो फियर की वजह से काम करते हैं. कुछ मेरे जैसे उल्लू के बट्ठे जो होते हैं वो होते हैं जो लव के लिए काम करते हैं, जो फियर के लिए नहीं काम करते. सो द ट्रिगर इज आइदर द फियर और लव. तो when you do it because there is a consequence you don't want, right? Or you do it because you just want to do it. Well, we all suffer for the things we believe in. So I just want to know how a business graduate like you ended up in the fashion industry. I was actually designing clothes much before I went to business school. Much before. Like I had gotten into designing work I think 16-17 के आस पड़ोस में. So yeah, मतलब वो वाली स्टोरी सबको पता है, बहुत पुरानी हो गई है. हाँ रगड़ा खा चुके हैं. ठीक है. हाँ मतलब मैं वो कपड़े बनाता था, लोगों को पसंद आए, मैं 50 रुपए लेता था वो. And surprisingly, I didn't see that story. Like है वो कहीं ना कहीं पड़ी होगी, but शायद पुरानी हो गई है. I'm not that relevant anymore. और such stories are also not that relevant. I think because people don't want to hear those stories now. I think people want to hear फैशन में क्या हो रहा है, वो वाले अवार्ड्स पे क्या हो रहा है. बट आई थिंक वो जो मैं कह रहा था ना, द स्ट्रगल इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड राइट नाउ. लाइक
so there's a mindset that happens. There's a social narrative that always is being जो पॉपुलराइज्ड होता है. एक पॉपुलर ओपिनियन होती है. आजकल पॉपुलर ओपिनियन स्ट्रगल्स की नहीं है. एक ज़माने में थी 10, 12, 15 साल पहले. आई थिंक पीपल वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट कि यार अच्छा तुमने ये काम कैसे शुरू किया, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, अपनी अच्छी बातें बताओ, अपनी बुरी बातें बताओ, इस तरह की चीज़ें वो करते थे. अब ये होता है कि अच्छा तुम्हारी लेटेस्ट फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ, अपने I think I'm living in the past then, because like that is the motive of my show, to listen to people's stories. हाँ, but to celebrate them, to celebrate their struggles. It becomes it's not a popular view right now. It is so I hope it becomes your thing becomes that. That's what I'm on as well. Allah karega कि ये हो जाए. Maybe next Oprah Winfrey and Jimmy Fallon, we can do it together. नहीं, आप अपना करो, मैं अपना करूँ. Don't worry. Okay, like I'm not hijacking. I'm just kidding, man. I'm just kidding. मैं कह रहा हूँ, मैं actually चाहता हूँ कि सब अपना अपना काम करें. Right. सब अपना अपना काम करें, अपने दिल से करें, इतनी मोहब्बत से करें कि उनके ये जो गोल्स है ना, वो ओपरा शोपरा ना हो. वो ओपरा खोपरा वाले गोल्स ही ना हो. Oh my God. उनके गोल्स हों. I want to be the best version of myself. That's it. That's it. So like we are talking about popular opinion and what a person likes. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि according to you, national or international, what do you think is the designer who is changing the narrative right now? Sadly, अभी कोई भी नहीं कर रहा. अभी कोई भी नहीं कर रहा. I see a lot of people taking popular views and converting them into narratives, which is cool, which is what's selling right now. So I have to give every designer the best benefit of the doubt, कह लें, क्योंकि देखो, you've just come out of 2 years of COVID. So any designer who is still alive and working has done something right. In their own opinion, nobody, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो जान के अपने लिए गलत करे. कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता. कोई भी नहीं होता. जो ड्रग्स भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो गलत काम भी कर रहे होते हैं, वो भी अपने लिए इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो अपने आप को जान के नुकसान दे रहे हैं. वो अपने हिसाब से बेस्ट ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स देयर कोपिंग मैकेनिज्म, राइट. सो द पॉइंट दैट यू वर आस्किंग अबाउट कि कौन सा डिज़ाइनर नैरेटिव चेंज कर रहा है, अभी नैरेटिव चेंज करने का टाइम ही नहीं है. अभी तो सर्वाइवल का टाइम है. अभी उन लोगों के लिए maybe I haven't seen a lot of recent work in the sort of global scene. Everybody is trying to make a mark. The mark right now is maybe a different requirement. It's not about changing narratives. It's actually just about accepting narratives. कि अभी जो popular view है, मैं उसको accept कर लेता हूँ तो मैं ठीक हूँ. और मैं नहीं करता उसको. And a lot of my friends and a lot of my colleagues say कि that's a wrong thing to do. But to do each their own, वो कर लें, मैं उनके लिए खुश हो जाता हूँ. Well, that is good. Munib bhai, what is the constant thing in your creative process? What is that constant element in your creative process? Change. And that is the constant element? You keep changing what you think? I keep changing what I think, yes. My thing is very simple. Yes. The basic कांस्टेंट, अगर आप, मुझे तो कांस्टेंट का मतलब भी नहीं पता ऑनेस्टली, बिकॉज कांस्टेंट कोई चीज़ होती नहीं है, हो नहीं सकती, बिकॉज द मोमेंट यू आस्क दैट क्वेश्चन इज गॉन. एग्जैक्टली. ठीक है, जब वो एक चीज़ चली ही गई है तो उसको हम कांस्टेंट कैसे कह रहे हैं? वो तो कांस्टेंट है ही नहीं. बट द कांस्टेंट जो ओनली चीज़ है वो चेंज है. तो मे बी देयर वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल. I get it. Now you get it. There you go. Okay, Munib bhai, ये वाला question is a bit critical. I won't say critical, but it's जो मर्जी पूछ ले यार. Okay, ठीक है. So Munib bhai, we hear people say that Pakistan is turning into a radical Islamic state. Okay. So I want to know, what is the future of fashion in this going to be radical Islamic state? You have to let the unknownness of the future happen. राइट. अब वो आपकी परसेप्शन है कि वो क्या होगा. ठीक है. लोगों को बहुत शौक है फ्यूचर प्रिडिक्ट और क्रिएट करने का, जबकि मज़ेदार चीज़ ये है कि आपकी एबिलिटी टू प्रिडिक्ट और क्रिएट आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है. और माइंड की एबिलिटी टू क्रिएट तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ वो चीज़ें बना सकता है जिनका उसको नॉलेज है. नॉलेज किस चीज़ का होता है? जो उसने पढ़ लिया है. Yes.
तो जो पढ़ लिया है वो फ्यूचर तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, जो assume कर परसेप्शन, ओह ये, ओह माय गॉड, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता है, yes. तो वो फ्यूचर कैसे हो सकती है? बिल्कुल, बेशक आपने परसीव किया कि वो फ्यूचर में होगी, बट आज आपने परसीव कर लिया कि ये होगा, रेडिकलिज्म आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आएगा, लेट्स अज्यूम, बट मैं कहता हूँ कि जो भी आएगा देखा जाएगा, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो हमें नहीं पता था कि बेनज़ीर का इस तरीके से ये होगा या वो होगा या ये होगा। तो so much of future has happened right in front of my eyes that nobody could have predicted, or I could not have predicted, and I am very happy with the way things are turning out or have turned out till this particular moment, right? Okay. तो मैं क्यों अपनी ज़हन को या अपने गोडों को ओवरलोड करूं कि यार मैं तुझे बताता हूँ 5 साल के बाद ये होगा, 10 साल के बाद ये होगा, और फिर हमारे कपड़े जो है वो ऐसे हो जाएंगे और वैसे हो जाएंगे, लोगों के सरों पे एंटेनाज होंगे और ये होंगे वो होंगे। मैं क्यों उसके बाद, जब होंगे तो देखा होंगे, जाएगा। जब नहीं है अभी जो है उससे चला लो काम, अगर चला सकते हो, अगर नहीं चला सकते ना चलाओ, अगर खुश, the only choice you have basically is, do you want to be happy in this moment or do you want to be unhappy in this moment? That's it. Because everything else is going to continue to happen. Your happiness is a choice. It is. It is a decision. The choice is in front of you. The decision is yours. It is as simple as that. You can choose, you can decide to be happy because there's so much to be happy about. You can also choose to be unhappy because there's so much to be unhappy about. ठीक है? That is why there is a choice and that is your decision, and when you take that decision to be happy, everything changes, and when you take that decision to be unhappy, everything changes that okay way. So Munib bhai, now we have just 2 questions left. Those are the signature questions. जितने मर्जी पूछो यार। I am loving you, thank you so much. Munib bhai, as right now I'm celebrating the struggle of your life, okay. I actually want to know what was the most struggling moment in your life. Nothing. A lot of people have asked me that, and I have always been thinking कि क्या था, किस बात पे मैं लोगों को रुला सकता हूँ कि मेरी कि तुम्हें नहीं पता कि make people cry, but I just want to know. यार नहीं था ना, नहीं हो, because देखो again point ये है कि मैं अभी खुश हूँ, मैं अभी खुश हूँ ना, लग रहा है ना, मेरी बूथी पे आई हुई है ना खुशी एक, तो मतलब मैं अगर अभी खुश हूँ, that means everything that has happened has led me to a place of happiness. अगर मैं उसमें से एक भी चीज़ चेंज करता हूँ तो it's going to create a parallel timeline that I don't know if I would have been happier then. तो अगर मैं अपने आप को आज में खुश देख रहा हूँ, that means everything, all the struggles, and there have been ample, like you know, कि मैंने 1000 रुपए से अपना ब्रांड शुरू किया, ये नहीं था, वो नहीं था, मुझे बड़े डिज़ाइनर ने, एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं जो अब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये कुत्ते को क्यों तुम फैब्रिक दे रहे हो, I'm just thinking about no, you can't even go there. So but चक्कर ये है कि वो सारा कुछ हुआ है, but I find that to be therapeutic now. I find that to be very relaxing. It has led me to a place where I am happy and satisfied and awesome. You are. So मतलब अब मैं क्यों किसी को जाके कहूँ कि यार अच्छा अगर मेरे पास स्टार्टिंग में, हाँ मतलब मैं तो खुद आगे जाके उनको सलाम भी करता हूँ जिन लोगों ने मुझे कभी पीछे से धक्के भी मारे होंगे, and I'm okay with that and they're okay with that because उस वक्त उन्होंने अपने लिए वो बेस्ट ही कर रहे थे. उन्होंने मुझे कोई जान के, मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी भी मुझे बुरा बोलते होंगे, आई एम मोर देन श्योर कि ये अभी भी जो, अगर गॉड फॉरबिड 4-5 लोग जो भी ये शो देखेंगे वो थैंक यू फॉर भाई मैंने तो पहली चीज अपलोड की थी, 6 सब्सक्राइबर्स थे मेरे पास यार, दैट्स इट, इट्स ओके एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. अगर उसमें से 5 लोग भी देख लेंगे और एक बंदे को भी आपकी कोई बात समझ आ जाएगी, दैट्स ऑल दिस इज गुड फॉर. दैट इज, डोंट वरी अबाउट के ओ मेरे 10 मिलियन कब होंगे और मुझे YouTube से फ्लैग कब आएगा. थॉट दैट ना, तो मैंने इसको मेरे ख्याल से बहुत देर पहले छोड़ दिया होता. हाँ, सो द पॉइंट इज कि अभी भी जो 2, 4, 5, 10 लोग देखेंगे फॉर इंस्टेंस, वो उसका वो क्यों वो कह रहे होंगे वो वड्डियां फिलॉसफियां मारता पे है,
वो ये इसका तो मैं तुम्हें बताता हूँ, चट्टा पट्टा खोलता हूँ. To each their own, man, let them. Munib bhai, the last question of my show is that what is that thing that keeps you bright in the darkest of times? That keeps me bright. I don't know. I don't know I don't even know when there's dark around me or inside me, because so what keeps you bright all the time then? Because like you never know when it's dark around you, so you must be bright all the time. Exactly. So then I don't know what keeps me bright, because the thing is, मैं उस बारे में थोड़ा सोचता हूँ कि stars अपने आप को क्या कहते होंगे? Stars, the stars who shine in the stars, sky? Okay. The stars. वो अपने आप को stars तो नहीं कहते होंगे? I don't know. Exactly. So the point is कि वो या सूरज अपने आप को सूरज नहीं कहता होगा. बड़ा stupid सा नाम है सूरज के लिए, सूरज. Okay. Hi, my name is Sun. अरे you are so fucking awesome and big and giant ball of fire and all of these words that we have created for the world. वो अपने आप को क्या कहता होगा? नहीं कुछ कहता होगा. जो भी कहता होगा हमें तो नहीं पता. हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं. जबकि ये हमारी बड़ी बेसिक सी बात है कि रोज एक सूरज निकलता है, वो पूरी दुनिया को लाइट अप करता है. ठीक है, उसको कैसे लाइट अप होता है उससे कभी किसी ने पूछा नहीं भाई, उसके अंदर है वो. But that's science. हाँ, so is humanity. Humanity को आप साइंस में ले जाओ तो वो भी वो बन जाती है. I don't know what keeps me bright, man. I just feel a few things I do. I don't know if that's what keeps me bright. I pray, I work out, I sweat. I sweat every day in anything I do. I make sure that I do the things that I love. I surround myself with love. Inside, outside, I'm blessed to be loved, and I love people with my heart and my soul. Yeah, it comes back because सिर्फ पहले न्यूज़ में सुना था ठीक है मुनीब नवाज इज़ वेरी लविंग पर्सन एंड लाइक ये वाला शो आ रहा है वो. यस आई हर्ड दैट. अच्छा. और क्योंकि सेलिब्रिटीज पोस्ट करते हैं, फॉर मी दैट्स द न्यूज़. नाउ आई एम मीटिंग यू, सो I would just like to say thank you so much for being on this show, and you are an amazing person, Munib bhai. You're very kind, man. You're very, very kind. So, I think अगर brightness, people choose darkness. People choose light. ठीक है? Just light like they choose to be happy and they choose to be unhappy. So I think light is happy and darkness is unhappy. And we are labeling that. What if darkness is happiness and light is unhappiness? That's a great question if you are stoned. But those are again words, right? That's just words. The meaning of it, the implication of it, and the effect of it is what we are talking about. Light and happiness is a feeling that we are talking about. उसको आप अल्फाज में जो मर्जी बोल दो, उसी को आप darkness बोल दो, है वो वही. बिल्कुल. ठीक है? And that is the whole, and that is the whole sort of discussion के अल्फाज का मतलब क्या. ठीक है? And that's you know the power of words, the power of spoken word, the power of our supposed intellect, the power of our ability to communicate, become a sapien and write these pseudo sort of ये philosophical मेरे दोस्त मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि तुम बड़ी सूडो बातें करो, तो मैं अपना भी उतना ही मजाक उड़ाता हूँ कि मैं बहुत सूडो फिलोसॉफिकल एक इंसान हूँ, और जब मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ मैं खुद अपने आप को बड़ा सूडो समझता हूँ. एंड दैट्स फाइन मैन. मतलब मैं कोई कुछ बेचने के लिए नहीं आ रहा. ये कोई ऐसी चीज़ लेबल्ड एवरीथिंग और इतना प्रेशर आ गया बिकॉज लाइक देयर इज फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर रोज सोशल मीडिया की वजह से. लाइक you just don't know what to call what. So like just call whatever you want to call with your heart. बिल्कुल. Just go with the flow. Like listen to your heart. हाँ, listen to your heart. Roxette ने बहुत अरसा पहले ये गाना गा दिया था. Yes. Yeah. इस तरह की. So मतलब poetry, history, art has always shown you what वर्ड्स के बगैर भी और वर्ड्स के साथ भी गुड और बैड बिल्कुल दोनों उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. आप जिस भी मीडियम में उसको एक्सप्लेन समझना चाहो आपके सामने है. Okay, thank you so much Munib bhai. Thank you so much for being on this show. Thank you so much. And I hope that this interview is seen by many people and not just 5 to 6 persons. अगर एक भी देखे ना भी देखे तो भी खैर है. Okay. Thank you Munib. More than welcome man. Good luck.